ओम गंगे चमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु रुद्र गंगा प्रवासे एतानि पुण्यतीर्थानि देवस्थानकाल भवन्त्यं विष्णोर्विष्णोर्विष्णुअद्यपन्यानि भाद्रवशुक्लदशम्यां शुभमङ्गलवासरे मूलाधनुगते श्रीचन्द्रमसि शुभदे स्थिते सिंहे श्रीभास्करे चाद्य छत्तीसगढराज्यगे बादालसागरसुस्थाने देवसाराश्रमे तथा गुणंतरा गौतम गोत्रे कैलासलोचनात्मक दुर्गा प्रसाद महासाध्य करी कनकेश्वर कृपया करिष्येमभिषेक मारुत्रेकं तर्पणं कनकेश्वर बुद्धिशाभ्यां देवसाराश्रमेश्वरस्य जगन्नाथ परं च श्री द्वितीयश्च हरिहरः तृतीय श्यामसुन्दरो विश्वम्भर तथैव च चतुर्थ अंशे मधुसारथी सदाशिवादयो अग्रजः जयदासरथी नारायणादया अनुजांसिनः पंचमांसे च बायिनी गोविंदश्च कृपा अग्रजाः ईशानश्रीकरमाधवादयश्च अनुजा तथा षष्ठांसे हरिहरश्च जगन्नाथो वनमाली नंद कपिल भिकारी साग्रजारमिश्रवंशिनः कृष्ण कैलास वैद्यश्च गोपी वासुश्च सानुजाः सप्तमांसे च भीमेन विजय त्रिनाथसह शारदा लडु बुद्धिनाथ अनाम श्रीहर्षपादः दंडवाणी तथा च विघ्नेश्वर अनुजांसगः नरसिंह तथा श्रीरामेण भीमादया अनुजाः अष्टमांसे प्रकाशेन गंगाराम भगीरथी जगन्नाथ शिवाभ्यां च रविनारायण अग्रजाः राजेन्द्रेण प्रमोदेन प्रदीपेन शिवव्रतः मागी जितेन्द्र सहेन प्रमोदेन अग्रजांसिनः संतोष राम सुरेन्द्रो विनोद मिहिरादयः विद्याधर स किशोर अश्च नवमाय तथाग्रतः उमा श्रीपति गौरी च महेन्द्र कालुचरणः शिव प्रसन्न सत्येन मनोजा अनुजरूपिणः अष्टमांसात् नवमांसे सत्यजित श्रीचंदनश्च श्रीकांत श्रीनिवासश्च श्रीवल्लभो सत्यव्रतः राजा केदार सहाभ्यामानीलश्च अनुजांसिनः पितॄणामस्तु वैकुंठवासो अपत्यानां च सुकुशलं महालक्ष्म्या सरस्वत्या चंद्रमणिश्च सुमुक्तया चंद्रमणिश्चरत्नरेखया नीलारास हेमादि सुलोचना च कमला पितृकुलस मातॄणामस्तु श्रीहरिभरसा मातृकुलस पितॄणामस्तु मातॄणामपि च तथा भरद्वाज गोत्रेण राधाचरणवंशिनः वनमालिश्च वैद्यश्च श्रीगणेशांसिनो प्रियः भरतकृष्ण भीमिश्चार्जुन मधुत्रिलोचनः जगन्नाथ स प्रफुल्ल वृंदावन हृषिकेश रजनीकांत विप्रेण प्रदीप प्रसन्ना अशोकाः रमाकांतश्च प्रताप प्रशांत चितरंजना पतंजलि च प्रियो मे रविशंकर शंकर विभुना पद्मलोचन सयन पुरुषोत्तम मातुलः सजीवानां च धराया मस्तु सौख्यमतुलं पुत्र पौत्रादिभिर्नित्यं श्रीश्च विराजतां गृहे वैदेही मुक्तया सारा सुवर्णी श्रीमती प्रिया सुना पद्मावती कुंत्युषा वासंती च चंचला सरस्वती च पूर्णिमा शांतिलचा च सुरमा सुमित्रा च सुवासंती गायत्री सहिता प्रिया सौभाग्य ज्योति संयुक्ता विलासिनी च रंजिता मीरा कवि च वेदवत्या च मिनति मधुमातुली सजीविन्यश्च मातुल्यः सौभाग्यशालिनी चिरा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड 50 सर्गः कथयित्वा तु दुःखार्थः सुमन्त्रेण चिरं सः रामे दक्षिणकूलस्थे जगाम स्वगृहं गुहः भरद्वाजाभिगमनं प्रयागे च सभाजनम् आगीरेर्गमनं तेषं तत्रस्थैरभिलखितम् अनुज्ञात सुमन्त्रो अथ योजयित्वा हयोत्तमा
अयोध्यामेव नागरिं प्रजजुगणदुर्मनाः सवनानि सुगन्धीनि सरिताश्च सरांसि च पश्यन्तो जामो शीघ्रं ग्रामाणि नगराणि च ततः सायन्न समये द्वितीयहनि सारथि अयोध्यां समानुप्राप्य निरानन्दं ददर्शः स शून्यमेव निःशब्दां दृष्ट्वा परमदुर्मना सुमन्त्रः चिन्तयामास शोकवेगसमहितः कश्चिन्न स गजासास्वा सजना सजनाधिपा रामसन्तापदुःखेन दग्धा शोकाग्निना पुरी इति चिन्ता परसूतो बाजिभिः शीघ्रयायिभिः नगरद्वारमासाद्य त्वरितः प्रविवेशः सुमन्त्रामभिधावन्तः शतशोऽथ सहस्रशः क्व राम इति पृच्छतः सूतमभ्यद्रवन्नरः तेषां संगङ्गया महमां पृच्छ राघवम् अनुज्ञातो निवृत्तोऽस्मि धार्मिकेण महात्मना ते तीर्णर इति विज्ञाय बाष्पन्नमुखा नरः ओहो धीगीति निःश्वस्य हारामेति विचुक्रुषुः शुश्राव च वचस्तेषां वृन्दं च तिष्ठताम् हता स्म खलु येनेह पश्याम इति राघवं दानयज्ञविवाहेषु समाजेषु महसु च न प्रेक्ष्यामः पुनर्जातु धार्मिकं राममन्तरा किं सामर्थ्यं जनस्यास्य किं प्रियं किं सुखावहम् इति रामेण नगरं पित्रेव परिपालितम् वातायन गतानां च स्त्रीणामन्वन्तराणां रामशोकाभिसन्तप्तानां शुश्राव परिदेवानां स मार्गमध्येन सुमन्त्रापिहिताननः यत्र राजा दशरथस्तदेवोपजयो गृहं स्ववतीर्य रथा शीघ्रं राजवेश्मं प्रविश्य च कक्ष्याः सप्ताभिचक्राम महाजनसमाकुलः हयैर्विमाने प्रसादैरवेक्ष्यात् समागतं हाहाकार कृता नार्यो रामदर्शनकर्षिताः आयते विमलैर्नेत्रे अश्रुवेगपरिप्लुतिः अन्योन्यमभिवीक्षन्ते अव्यक्तार्थतरा स्त्रियः ततो दशरथस्त्रीणां प्रासादेभ्यस्ततस्ततः रामशोकाभिसन्तप्तानां मन्दं शुश्रावजल्पितम् असह रामेण निर्यातु विना राममिहागतः सुत किं नाम कौसल्यं कृषतिं प्रतिवक्ष्यति यथा च मन्ये दुर्जीवम् एवं न सुकरं ध्रुवम् अच्छिद्य पुत्रे निर्याते कौसल्या यत्र जीवति सत्यस्वरूप तु तद्वाक्यं राजस्त्रीणां निशामयं प्रदीप्त एव शोकेन विवेश सहसा गृहं स प्रविश्याष्टमीकक्ष्यां राजानं दीनमातुरं पुत्रशोकपरिद्यूनमपश्यत पाण्डरे गृहे अभिगम्य तमासीनं राजानमभिवाद्य च सुमन्त्रो रामवचनं यथोक्तं प्रत्यवेदयत् स तूष्णीव तच्छ्रुत्वा राजा विद्रुतमानसः मूर्छितो व्यपतत् भूमौ रामशोकविपीडितः ततोऽन्तःपुरमाविद्ध मूर्छिते पृथिवीपतौ उत्श्रिय बाहु उच्चक्रोश नृपतौ पतिते खितौ सुमित्रया तु सहिता कौसल्या पतितं पतिम् उत्थापयामास तदा वचनं चेदमब्रवीत् इयं तस्य महाभागा दूतं दुष्करकारिणः वनवासादनुप्राप्तं कस्मन्न प्रतिभाषसे अद्य ममानयं कृत्वा व्यपत्रपसि राघव उत्तिष्ठ सुकृतं तेऽस्तु शोकेन स्यात् सहायता देवद्यस्य भयाद् रामं नानुपृच्छसि सारथिं नेह तिष्ठति कैकेयी विश्रब्धं प्रतिभाष्यतां सा तथोक्त्वा महाराजं कौसल्या सुखलालसा धरण्यं निपपातासु बाष्पविप्लुतभासिनी एवं वीळपतिं तथा दुष्टकौसल्यापतितं भुवि पतिं चावेक्ष्यताः सर्वा समन्तात् रुरुधु स्त्रियः ततस्तमन्ता पुरनादमुत्थितं
समीक्ष्य वृद्धास्तरुणाश्च मानवान् स्त्रियश्च सर्वारुरुदु समन्ततः पुरं तदासीत् पुनरेव संकुलम्। इति श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्याकाण्डे 57 सर्गः। यः सुमवासरे मया रचितं छतोना दधिसेविता जया अहम दधि प्राप्तः तस्याः सर्वविध कल्याण भवतु प्रभु। छलयति मतिशा यदीश्वरस्य कृपास्ति न छलयतीश्वरो यदीशा आत्मनि स्यात् कालमसंचनु तावन्ममाद्य छतो न ग्रामागतः च भरतः तादात्म्यभावेन आह्वयति मं च पार्श्वतः नाहं करोमि किंचित् भो भक्षणमनचर्वणं नित्यमहं च पञ्चामृतेन चलामि पयसा दधि च शकमादाय मनीषा मातृरूपिणी दत्तवतीति विचारे सोमा अमृतं मयार्जितं धरित्री कंपिता देव आपगानस्थानभूतले धरणी गृहिणी रूपा दानधर्मेण पूजिता सेवमानाश्च मनुष्यः चिरधर्मस्य रक्षकः स्वयं जदा स्वहिताय स्वार्थी चेत् तरिका भवेत् विद्या विनय संपन्ना चेरात्मदर्शनेन च विश्ववाणिज्य क्षेत्रे च भारत चिन्द्रुषीवलाः तात्कालिक विचारे ऐकेन यदि च सम्मतिः तत्त्व अग्रे स्थिरतायै च मनीषा मानसीसिता भरतपुत्रस्य बधुमनीषया कृतं मदर्थे दधिसेवाया चैवास्तु चिरसत्फलं पुत्रकन्ये च तस्याश्च सौभाग्यशालिनः चिरं सा न सन्तु इति मत्कृता आशीर्भिः प्रियतं देवता सदा। दालसागर देवसारा आश्रमष्टकं दानेषु दानमत्यन्तं मस्ति प्रियं च बाध किं दानभोजनमथवास्ति शिक्षा विश्रामिता सुमुत लक्ष्मीर्गर्भे ममास्ति त्वा भोजनाय नहि स्पृहा लब्धा शिखा तथा प्राक् तथास्तु गुरोश्च सत्कृपा सायं यावच्चलमानाय मे त्वस्ति केवलं प्रभु सार्थकरात्रिविश्रामं तत्तु तव कृपाशिषा गच्छन् चैव श्रीक्षेत्रं प्रति सुस्थिरं गम्यमानो अद्य सायं च दोलसागरमागतः रात्रिं वसन्नहं चात्र अनुभवामीश्वरकृपां रामकृष्णेश्वर नाम्ना बालाजी गणहनुना देवी गायत्रीति मन्या गंगा दुर्गा च कनकः देवी वाणी च जानक्या श्रीराधा प्राणपोषिका वन्दामि गणनाथं च हनुमन्तं बुधेश्वरं विन्दामि श्रीनृसिंहं च बालाजीनं पुनः पुनः साक्षात् रामं च कृष्णं च गायत्रीं पावनीं तथा साष्टाङ्गप्रणिपातेन दुर्गां च कनकं पुनः रक्षतं वाणी नमामि तं दिने दिने रामपत्नीं च सीतं च कृष्णप्रियं च राधिकं देवसाराश्रममागत्य यदष्टकं मया कृतं तत्तु सप्तमुखीय श्रीलक्ष्मीनृसिंहयोरर्पितम् पुनश्च ह्यः यथा मया श्रुतम् अमेरिकादेशस्य राष्ट्रपतेः वाणिज्यिकसचिवः पीटर् नवारो तथा ब्राह्मणानां विरुद्धे यत् उक्तं तस्य विरोधे न मया एक पद्यं रचितमस्ति तस्य तथा सार्थकं भवेत्। Peter Navarro, a player of pillas. Players are ready for playing. Peter Navarro, but a player of pillas. Even he does not know to Brahmins, each and every Brahmins knows to him a pilla. Teach to him once, I think tit for tat lesson must be taught to him. Education lessness narrow minded ended his prestige without
securing life. Remember, oh Peter, run out your power of voice. Never you will be succeeded to. Nationwide unity losses in India ahead. After meeting with Putin at last, America ideology so off. Alas, very terrific moment you get. Version of will be your voice will be the end. Ready, read at first. What is Brahman? Recall to your inner entity to know it. Restlessness thinking against urge. Remember once, who are you on earth? Oxygenlessness body you have. Options are outed for you ahead very soon. Peter Navarro, a player of Pilla, please don't play with us without knowledge of Brahman. हरि ओम अंगं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलावरणं तमालम् अङ्गीकृता किल विभूतिरपाङ्गलीला मङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवताय मुग्धा मुहुर्विदधति वदने मुरारे प्रेमात्रपा प्रणिहितानि गतानि मालाधृतोर्मधुकरीव मुहोत्पलेया श्यामे श्रियं सुसागरसम्भवाय विश्वामरेन्द्रपदविभ्रमदानदक्ष्य मानं दहेतुरधिकं मुरभिद्विषोऽपि ईशा निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्ध मिन्दीवरोदरसहोदरमिन्दिराय आमीलिताय किमधिगम्य मुदा मुकुन्द मानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् आकेकरास्थितकनीनिपक्मनेत्रम् भूतिर्भवेन्मम भुजङ्गशयङ्गनाय बाह्वन्तरे मधुजिता स्थितकौस्तवेजा आरावलीव हरिनीलमयी विभाति कामप्रदा भगवतोऽपि घटाख्यमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयाय कालाम्बुदालिललितो रसिकैष्टवारे धाराधरे स्फुरदिजातडिजङ्गनेव मातु समस्तजगतां महनीयमूर्ति वीरभद्राणि मे सौभाग्यवनन्दनाय प्राप्तं पदं प्रथमतः किल जत्प्रभावान् मङ्गल्यभाजमजमातिनिमन्मनेन मज्जाभजमं परमीक्षणार्धं मन्दालसञ्चमकरालयकन्यकाय दद्यादयानुपवनो द्रविणम्बुधारा मस्मिन् किञ्चन विहङ्गशिशो विशाने दुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं नारायण प्रणयिनी नयनम्बुवाः इष्टाभिशिष्टमतयोऽपि जया जयाळ दृष्ट्या त्रिभीष्टपदं सुलभं लभन्ते दृष्टिप्रहुष्टकमलोदरदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृशिष्टमम पुष्करविष्टराय गिर्जे वदेति गरुडाधुसुन्दरीति साकं शेखरवल्लभेति सृष्टिस्थितिप्रलयकेळि संस्थिताय काशी नमस्त्रिभुवनेकगुरुस्तरुणि श्रुति नमस्वकर्मफलप्रसूति राति नमोस्तरमणे गुणार्णवाय शक्ति नमो सतवदनकेतनाय पुष्टि नमो पुरुषमूलवाय नमोस्तु नालिक निवारणाय नमोस्तु दुग्धजन्ममूर्ति नमोस्तु सोमान प्रसूराय नमोस्तु नारायण वल्लभाय संप्रदाय की सर्वंजय मामे मात्र काढून माने जपकडे हम वासना विधी सबकदम माने शिस्तम मध्ये सरसिजन रबळ जमा गंधमले तेरे वलवे मन के त्रिभुवन मध्ये प्रेम दिग्दस्ति विकन कुम मकाबस सोसोन प्रातर नमाम जगतं जननी मशेष लोकानाथ गुरु नमन कमले कमले के वलवे करुणापुरदम अवलोकमं किंचन प्रथम पादम गुरुने स्तुबंधि जे दो मुविरण त्रैमे दुर्गमं गणे गुरुदेव भाग्य भवन तिथे गुरु सर्वसोबन दरसत्तम जस प्रधान त्रिचन्न जपणे सपवर समवेत इति सिंह संग्रहाय वेद कनदर संपूर्ण ओम श्री गुरु चरणाय नमः गुरुरूपां गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु चरण तस्मै श्री गुरवे नमो नमः हरि ओम संग्रहात्मने नमो नमः आदि संग्रहाय नमो नमः ओम ग्रंभीर महाबलरवाता मुखनृसिंह विषाणवेदमुतोदनमामि सप्तम मुखनृसिंह सप्तम के महालक्ष्मी नमः सदस्य लक्ष्मी सिंहाय नमो नमः ओम श्री लक्ष्मी सिंहाभ्यं नमो नमः
निधीनं त्वाः निधिपति गंगामसमगणनाथ नमो नमः श्री गुरुचरणाभ्यं नमो नमः ओम श्री गुरुचरण सरोजर निजम नम कृष्णधारी वरण रघुवर विमल फल ओम हनुमते नमो नमः हरि ओम त्र्यंबकं जजामि सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं प्रभारोकमे मृत्युमुखमां नमो नमः बुद्धिश्वराय नमो नमः बुद्धिश्वराय नमो नमः बुद्धिश्वराय नमो नमः केदारेश्वराय नमो नमः विश्वेश्वराय नमो नमः सोमेश्वराय नमो नमः नागेश्वराय नमो नमः त्रयंबकेश्वराय नमो नमः भीमशंकराय नमो नमः विष्णुश्वराय नमो नमः त्रय ओंकारेश्वराय नमो नमः महाकालेश्वराय नमो नमः बुद्धिनाथ नमो नमः मल्लिकार्जुनाय नमो नमः रामेश्वराय नमो नमः लिंगराज नमो नमः लोकनाथ नमो नमः ईशानेश्वराय नमो नमः संडेश्वराय नमो नमः गोकर्णेश्वराय नमो नमः ब्रह्मेश्वराय नमो नमः कपिलेश्वराय नमो नमः गुप्तेश्वराय नमो नमः दालसागरेश्वराय नमो नमः छत्तीसगढ़ ईश्वराय नमो नमः बिलासपुर ईश्वराय नमो नमः विश्वसंतिकारकाय नमो नमः हरि ओम उग्रमिरमाणरवातामकं नृसिंहभीषण भद्रमृत्युमुक्तो नमाम्यहम् ओम नृसिंहाय नमो नमः नृसिंहाय नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः ओम रांगनामाय नमः रांगनामाय नमः रांगनामाय नमः ओम क्लीं कृष्णं विनय गोपीजन बलाय ओम क्लीं कृष्णं विनय गोपीजन बलाय क्लीं कृष्णं विनय गोपीजन ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम भूर्भुवः स्वः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ओम गंगेचैव नेचैव गंगावती सरस्वती नर्मदे सिन्धु गुरु गुरुत्रय गंगा प्रवास पुष्कराणि एतानि पुण्यतीर्थानि देवस्नानकाले भवन्ति गंगादि सप्तमातृका दिव्य नमो नमः ओम गंगादि सप्तमातृका दिव्य नमो नमः ओम गंगादि सप्तमातृका दिव्य नमो नमः ओम दुम दुर्गाय नमः दुम दुर्गाय नमः दुम दुर्गाय नमः दुम दुर्गाय नमः ओम कर्णधाराय नमः कर्णधाराय नमः कर्ण ओम पावकान सरस्वती वाजे वाजे जगम या सरस्वती नमो नमः या कुंदिंदु तुषार हार धवला या शुभ्रा वस्त्रम या वीणा वरदन्न मंडितकर या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मचित भृगु सदावंदे सानाम सर्वभूति निशेष जड्यम ओम सरस्वती नमो नमः ओम सिंह सीताय नमः सिंह सीताय नमः राधाय नमो नमः ओम संताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं श्रीशं विश्वाधारं गगनसुमेघं सुधांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ज्योतिर्विधानं गम्यं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं नीलाचलनिवासं नित्याय परमात्मने बलभद्रसुजगन्नाथाय नमो नमः ओम नमस्ते महामे श्रीविटेश्वरपूज्यते संगदग्रदार महालक्ष्मी नमस्ते गुरुडारूढ़ कुलासुर भयंकर सर्व पावन महालक्ष्मी नमस्ते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण हे नाथ नारायण तमेव माता पिता तमेव बंधु जगत तमेव विद्याधर तमेव सर्व मम देव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत् ओम श्री गुरुचरणाय नमो नमः सर्वे देवेभ्यो नमो नमः सर्वे ऋषिभ्यो नमो नमः सर्वे पितृपुरुषो नमो नमः सर्वे पितृपुरुषो नमः सुस्वपुण्यवळेन वैकुण्ठं गच्छन्तं श्री गुरुचरणाय नमो नमः ओम श्री गुरुचरणाभ्यं नमोस्ते गुरुडारूढे कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते श्री गुरुचरणाभ्यं नमो नमः ओम श्री हरिनारायण नमस्ते गुरुडारूढे कोलासुर भयंकर सर्व पाप महालक्ष्मी श्री हरिनारायण नमस्ते गरुडारूढ़ कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव नमस्ते गरुडारूढ़ कोलासुर भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमस्ते गोविंद गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नमो नारायण नमस्ते गरुडारूढ़ नमो नमः।